All right, here you go. First of all right, so now we are going to talk about acronyms, abbreviations, and jargons, and how we use them, and what kind of information they provide to the readers, and how do we need to provide them, or how do we need to write them. All right, so what is acronyms? Acronyms is an abbreviation from the initial letters of the words and pronounced as a single word. That is acronyms. Acronyms क्या है? एक क्या कंपाउंड वर्ड है, एक वर्ड है, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ अल्फाज के पहले पहले जो लेटर्स हैं उनसे लिया गया होता है, और उसको हम एक लफ्ज के तौर पे पढ़ सकते हैं. फॉर एग्जांपल नासा. Correct. So we can read as one word NASA. So N mean national, A aeronautics, and S space, and A administration. So what we have done, we have taken initial letters of every other word, and we make it an acronym, and that we can read as a one word NASA. So that's acronyms. For example, NAB, National Accountability Bureau. So N national, A is taken from accountability, and B is taken from bureau. So it becomes NAB, and we can read it as in one word, not NAB, but NAB. Same is the case with BASA, alright, etc. So these are acronyms. Okay, so what is abbreviation? Abbreviation is it's also taken a single word created from the first letters of multiple words, but not produced as one word. So the difference between acronyms and abbreviation is that uh, acronyms can be pronounced as one word, but abbreviations, in case of abbreviation, cannot produce them as one word. For example, IBM, we cannot read it as IBM or any kind of pronunciation as a single word. All right, we will read IBM. So discreetly we pronounce them. All right, so IBM, I, सॉरी ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है. यहाँ पे NFL था, ठीक है, जो नेशनल फुटबॉल लीग है, ठीक है. ऑलराइट, सो NFL, अब उनको नेफल नहीं पढ़ सकती है. नेशनल, N taken from national, F letter is taken from football, and L from league. So National Football League. So in abbreviation we write it NFL. But because it is not, it cannot be produced as one word, so we say it abbreviation. CIA, Central Intelligence Agency. So C is taken from central, I is taken from intelligence, and A from agency. So these are the first letters, CIA, of other letters, but they cannot be produced as a single word. That's why we call it abbreviation. Same is the case with FIA, Federal Investigation Agency. So understood the points, the difference between acronyms and abbreviations. All right. So now, what is jargon? Jargon is technical language of any specific field. All right, every field has technical language, and only technical person of that field can understand that language. All right, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी फील्ड की जो स्पेसिफिक लैंग्वेज, जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं, उसे कहते हैं jargon. All right, for example, if you ever experienced a doctor uh, describing the patient, and one of his assistants writing down everything what the doctor says. So if you have observed, they're usually different language. They don't speak English language. I mean, they talk medical language. The language is being used medically, okay? So they use that language. For example, if a doctor or any nurse or attendant wants to measure the temperature, so he will not say, okay, measure his temperature. He will or measure his blood pressure. So the doctor will say,
टेक हिज वाइटल्स, टेक हिज वाइटल। अब वाइटल्स का मतलब क्या है जी, कि इसका बुखार चेक कर लें, इसका ब्लड प्रेशर चेक कर लें, हार्ट बीट इसकी जो है ना वो उसको जो है ना वो फील कर लें, दैट्स इट। अब उसने वाइटल का लफ्ज यूज द वर्ड वाइटल, नॉट मेजर, या आम जुबान में उसने नहीं कहा, तो उसने ही हैज यूज्ड वेरी टेक्निकल लैंग्वेज। सेम इज द केस विद कोर्ट लैंग्वेज। जैसे मुद्दई होता है जी, मुद्दई है, डिफेंडेंट है, तो मतलब हर फील्ड की अपनी एक लैंग्वेज है, एक खास टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल की हो सकती है, लॉ की हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्डिक अरेस्ट। अब कार्डिक अरेस्ट जो है, दैट इज अ टेक्निकल वर्ड, वी डोंट यूजुअली पीपल डोंट नो द मीनिंग ऑफ कार्डिक अरेस्ट, लेकिन जब उनको कहेंगे ना हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ गया जी, आप कहेंगे जी इस मरीज को कार्डिक अरेस्ट हो गया, तो मे बी योर रीडर्स और द लिसनर्स माइट नॉट अंडरस्टैंड द फ्रेज कार्डिक अरेस्ट, बट व्हेन यू विल से ओके उनको दिल का दौरा पड़ गया है, तो नाउ एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड ओके यार, बिकॉज वो जो बात है दिल का दौरा, दैट इज वेरी कॉमन, ठीक है, दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड, वो उनको समझ आ जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, सो if you are using acronyms, abbreviations and jargons, you need to write down their abbreviated forms as well. There, you need to explain them as well. ठीक है? If you want to, if the word if you want to, if there is a very dire need to mention that abbreviation or jargon, there is no way that you cannot use jargons or abbreviations. You have to use them. Then you need to explain them. अगर आपने jargons, acronyms और abbreviations का इस्तेमाल करना ही है, ठीक है, and you cannot communicate or express your idea without using them, तो फिर आपने क्या करना है, उनको explain भी करना है, ठीक है। फिर आपने ऑडियंस भी देखनी है कि मेरी ऑडियंस कौन सी है, और मैं उनको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने CIA लिख दी है यहाँ पे, CIA, सो CIA का मतलब कैश इन एडवांस भी तो हो सकता है ना, CIA का मतलब कैश इन एडवांस भी हो सकता है कि कैश हमें पहले चाहिए, मे बी आप जो है ना वो कैश इन एडवांस लिख रहे हो, वो अगला बंदा सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी समझ रहा हो। So, whenever you write an abbreviation or jargon or acronyms, you need to be specific. You need to explain what are you talking about. What do you mean by CIA or FIA or an NFL? What do you mean? So you need to define these terminologies in order to make your writing accessible or understandable for your readers. So far we have covered the part of clarity. All right, so if we go back to our first slide, okay, look at the first objective was clarity, so we have covered that part so far. All right, so now let's talk about conciseness. That is the second objective of our uh, writing. All right, second objective is conciseness. So second major goal in technical communication is conciseness. So what doing by conciseness? Remember, we have covered that part as well in seven C's of effective communication. So basically, what do we mean by conciseness? Conciseness is providing the information in fewer words, in fewer possible words. चंद अल्फाज के अंदर अपनी बात को convey कर देना, that is conciseness. All right. So conciseness is important. Why do we concise our text? Why do we need to concise our technical communication? So there are three reasons that we need to concise our communication. The first thing is it saves your time. If you have uh, now look at the example. For example, if you're writing 5 paragraphs, and on the contrary you're writing 1 paragraph. All right. So uh, कौन सा जो पैराग्राफ है या कौन सी राइटिंग आपका टाइम विल टेक योर टाइम मोर, ठीक है। ऑब्वियसली the writing in which you have to produce 5 paragraphs, that will be time taking process, but if you're writing 1 paragraph, it will be you can say easily be done, ठीक है।
आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. It will not take as much time as you writing 5 paragraphs. So the first reason you need to concise is it will save your time. And on the reader part, on the listener part, if the reader is uh, reading your point of view, so what do you think? What will be taking more time, if you have written 5 paragraphs or one paragraph? Obviously, one paragraph. The reader will take it simple while reading a one paragraph uh, assignment or task or topic, rather than reading 5 paragraphs. उसके लिए आसानी क्या होगी? एक पैराग्राफ को पढ़ना, ना कि 5 पैराग्राफ को पढ़ना. So it will conciseness saves time on both ends. It is equally important for reader and the writer. दोनों के लिए ये फायदेमंद है. Conciseness aids clarity. So if you have write your detail in fewer words, it will bring clarity in your uh, communication or technical writing. So if you are using too many things, if you have wrote too many sentences, so it will break your communication and clarity will be taken away from your text. Technology demands conciseness. I mean, now technology demands conciseness. For example, आप text message लिखना चाहते हैं, so you have certain space or certain message length in order to write your text message. ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि एक स्क्रीन पर जितनी इंफॉर्मेशन आ जाए हम सिर्फ उतनी लिखते हैं. ठीक है. ईमेल, वी हैव मोर स्पेस ऑन ईमेल. ठीक है. तो हम कोशिश करते हैं कि हम एक ही पेज पे ईमेल की जो जो स्पेस नजर आ रही होती है, उसी हम स्पेस के ऊपर ही अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर दें. ठीक है. हम कोशिश करते हैं कि हमें स्क्रॉल डाउन करके ज्यादा पेजेस इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े. Alright, so that's why technology demands conciseness. Alright, so saves time. It is time consuming. I mean, I have explained that part before. कि अब ये आपका वक्त भी बचाता है, रीडर का वक्त भी बचाता है. So it is a research that says that American workers spend 30% on average of their total time in writing. All right. So you spend on average 30% of your time. For example, if you have to work 9 hours a day, so you spend 3 hours on writing or doing technical communication. So if you write too much and if you write in vague and abstract way, and you use lengthy sentences or complex ideas, and you don't bother about the principle of conciseness and clarity, so what are you doing? You are ruining yourself. I mean, writing too much, and uh, your reader won't understand it, and they send your information back that we couldn't understand your point of view. We couldn't understand what are you talking about in your email. Please rewrite it again. So what will happen? It will take your time, extra time. Will take you extra time, and you will then send clarify emails. फिर आप उसको कहेंगे यार ये नहीं, ये मैंने ये कहना चाह रहा था, ये कहना चाह रहा था. So if you write in a concise and clear manner, it will save your time. It will not only save your time but the times of your reader as well. So conciseness helps save the time. It adds, sorry, it aids clarity. Clarity means if paragraphs are lengthy, the reader skip and skim so much. All right. Now, if there is a text of, let's say, 3 pages, and on the contrary, as compared to there is another text that only contains 1 page, so what will be uh, easy to understand? What is easy to read? 3 pages or 1 pages? Obviously, 1 page. All right. So because we want to read less information, we want to read, I mean, we don't want to spend extra time or on just reading. All right. So in this technical word, in this you can say capitalist word, everyone times is very important. Everyone is busy, so they don't want to read everything, and
a text of 5 pages or 3 pages, but they would definitely prefer to read a text of 1 page or 2 page or one paragraph even. So if you have written something, let's say you have written an email of 5 pages and the reader has to scroll down and down and down, so what will happen? He won't read your uh, your text or email word for word. He will skip and skim कुछ, he will क्या वो क्या करेगा, कुछ पैराग्राफ जो होंगे, कुछ लाइनें होंगी, उनको छोड़ देगा और वो जल्दी से देख के वो वो जो है वो रिव्यू करेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रिटन, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू वांट टू कन्वे। तो अगर उसको अच्छी लगेगी तो वो उसको देख लेगा, अदरवाइज ही वॉन्ट रीड योर ईमेल होलसेल, ठीक है, वो उसको पूरे तरीके से मुकम्मल तौर पे उसको नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसको स्किप कर देगा, स्किम कर देगा। ऑलराइट, सो they miss a key point. So when they are in the process of skipping and skimming, they might miss your key point. आप उन्होंने जब देखा कि ये the text contains 5 pages, तो वो क्या करेंगे, skip and skim करेंगे, because nobody has a lot of time for reading your 5 page email. तो वो क्या करेंगे, skip and skim जब करेंगे तो during that process they might miss a very informative information that you wanted to uh, wanted your reader to understand। जो पॉइंट आप चाहते थे कि आपका रीडर अंडरस्टैंड करे, वो हो सकता है कि वो उसमें मिस कर जाए उस skip और skim के प्रोसेस में, because you have written too much, because your paragraphs are lengthy। All right, and when the reader will look at your email of 5 pages, so what he will say, oh no, I will never be able to finish that. So will be the first reaction of the reader will be, okay, it's too lengthy, I don't have much time, so I will never be able to finish that। मैं कभी भी इसको खत्म नहीं कर पाऊंगा यार, इतनी लंबी ईमेल लिखी हुई है। इमेजिन करें ना, इमेजिन you have received an email of 5 pages, all right, so what will be your first reaction? So, I mean, that will be your first reaction. Okay, I will never be able to finish that. So, conciseness makes your writing more appealing to your readers. So, if you have written 1 page email, so it will be more appealing for your readers to read it, to understand it. So, they don't, they won't skip and skim because the text is concise, it has clarity. So, so what will be the first section? I can read that easily because you have used the principles of conciseness and clarity. Your text is very limited. You have expressed your ideas in a limited way, in a very in fewest possible words. So that makes your text easy to understand. So your reader's reaction will be, I can read that easily. So if your text has conciseness, so what will happen, what will the benefit of it? So it will increase comprehension and readability of your text on the part of the reader। तो उसको आसानी से समझ आ जाएगी, वो आपके टेक्स्ट को आसानी से समझ जाएगा। All right, next, technology demands conciseness। All right, so technology limits your space। All right, so you write whatever fit in a box. I mean, when you are writing a text message, so you have a limited space to write a message. Obviously you can scroll down and you can write a text message containing 3 or 4 messages, that is equivalent to 3 or 4 messages, but still you try to use the space that is in front of you while writing a text message. You don't write too much that the reader has to scroll down and he, because again your reader won't have extra time. Whenever we receive a message that is too lengthy, we always skip that, we always skip that message। हम नहीं पढ़ते हैं, जब हमें एक मैसेज मिलता है जिस बहुत ज्यादा लंबा होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको पढ़ते नहीं है। और even we read 1 or 2 sentences, and if we find that text interesting, we read further, otherwise we delete or skip it।
ठीक है। तो फिर क्या इसका क्या टेक्नोलॉजी क्या कहती है आपसे कि भाई यू राइट ऑन ओनली द स्पेस अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, जितनी आपको फ्रंट पे स्पेस नजर आ रही है उसमें लिखें जो एक बॉक्स में फिट हो सकती है। ठीक है, सो यू हैव a certain space of for email, cell phone, etc. तो टेक्नोलॉजी भी आपसे यही कहती है कि कंसाइज रहें। ठीक है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। All right, so now how to bring conciseness in your text or in your technical communication. So that's very important question. So the first step is that you can bring conciseness by applying that principle, that is limit words and sentence length. All right. So try to use limited words. Uh, try to use limited sentence length. और छोटे छोटे जुमले लिखें, थोड़े अल्फाज का इस्तेमाल करें। ठीक है, राइटिंग इज फ्लॉड व्हेन फिल्ड विद एक्सेसिव वर्ड्स, योर राइटिंग बिकम फॉल्टी। ठीक है, व्हेन यू हैव यूज्ड एक्सेसिव वर्ड्स, दैट वर्ड्स that they are not uncalled for, all right, जिनकी जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, यू हैव रिटन देम अननेसेसरीली। ठीक है, उनकी जरूरत नहीं थी, आपने फिर भी जानबूझ के उनको लिखा हुआ है। यू हैव रिटन योर टेक्स्ट इन लॉन्ग पैराग्राफ्स। ठीक है, अननेसेसरली, गैर जरूरी तौर पे आपने आपने लंबे लंबे आपने जो है ना वो बना दिए हैं आपने। ऑलराइट, सो द राइटिंग बिकम्स फॉगी। ठीक है, व्हेन यू हैव रिटन टू मच टेक्स्ट और हर तरफ टेक्स्ट ही टेक्स्ट नजर आ रहा है। ठीक है, और आपने कोई स्पेस ही नहीं छोड़ी हुई, कहाँ कहीं पे कोई वाइट स्पेस ही नहीं दी गई, तो क्या होगा, योर टेक्स्ट बिकम फॉगी। सो लिमिट योर सेंटेंस लेस देन 15 वर्ड्स। सो sometimes we use a sentence and it contains 4 or 5 sentences, or it may go along, 5 lines or 6 lines even। एक ही जुमला 5 से 6 लाइनों का बनाया होता है। सो लिमिट क्या है कि 15 वर्ड से ज्यादा का सेंटेंस ना हो। इसका मतलब क्या कि आपका सेंटेंस सिंपल रहेगा। जब सिंपल रहेगा तो कंसाइसनेस आएगी, कंसाइसनेस आएगी तो कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी और जो रीडेबिलिटी है ऑन द पार्ट ऑफ द रीडर वो इंक्रीज हो जाएगी। Okay, second principle is for bringing conciseness, that is avoid shun words। ठीक है, अब ये शन वर्ड्स कौन से हैं? द वर्ड्स एंडिंग इन TION, SION, और जिनकी साउंड शन आती हो, यानी ऐसे वो अल्फाज जिनके अंदर शन, SION, TION एंड पे आ रहा हो, या उनकी साउंड से शन की आवाज आ रही हो, तो वो लफ्ज इस्तेमाल करने से अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कंक्लूजन, ठीक है, एक्सेप्शन, रिवीजन, इन्वेस्टिगेशन, शन, इम्प्लीमेंटेशन, यूटिलाइजेशन। अब इन सब के अंदर शन शन की आवाज आ रही है, या इनके एंड पे जो है SION या TION आ रहा है। ठीक है, ये देखेंगे इन्वेस्टिगेशन में TION आ रहा है और कंक्लूजन में SION एंड पे आ रहा है। अच्छा, अब होगा क्या, जब आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे ना, तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको साथ में कुछ अल्फाज अटैच करने पड़ेंगे। यानी इफ यू आर यूजिंग शन वर्ड्स, यू नीड टू attach more words with that word in order to make it appropriate and make it proper। इसको appropriate करने के लिए, शन वर्ड्स को appropriate करने के लिए आपको कुछ और अल्फाज का इस्तेमाल करना पड़ता है, और उससे क्या होगा, कंसाइसनेस खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आप फॉर एग्जाम्पल केम टू द कंक्लूजन लिखने की जगह पे आप लिखें कंक्लूडेड 1 वर्ड। नाउ हियर यू हैव यूज्ड 4 वर्ड्स, और आपने उसकी बजाय क्या कर दिया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग 4 वर्ड्स you have just written 1 word, that is concluded, with the exception of, except for or but। ठीक है, make revisions, revise। अब देखिए यहाँ 2 वर्ड्स है यहाँ पे, consider implementation। ठीक है, 2 लफ्ज हैं बड़े बड़े, implement, just simple implement। alright, so avoid using shun words। शन वर्ड जब आप लगाएंगे तो उसके साथ आगे पीछे आपको और अल्फाज लगाने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी राइटिंग फॉगी हो जाएगी।
ठीक है, उसमें से कंसाइसनेस खत्म हो जाएगी। सो द सेकंड प्रिंसिपल इज, in order to bring conciseness, is avoid shun words. All right, so the third principle, very important point to bring conciseness, is avoid camouflage to words. Camouflage क्या होता है कि यू नो व्हेन इन सर्टेन मूवीज, जैसे कमांडो मूवी होती है या इस तरह की और मूवीज होती हैं, तो वो यू सी के व्हेन दे वांट टू अटैक समवेयर, टू व्हेन दे वांट टू अटैक सम प्लेस, तो वो क्या करते हैं, दे कैमोफ्लेज देमसेल्व्स। तो वो दे दे वेयर सर्टेन कलर्स। वो अगर उन्होंने मतलब चलना हो जंगल के अंदर से, तो वो जंगल के जो ग्रीन कलर होता है, जो ब्लैक कलर, उसके ऊपर उसके उसी तरह के कपड़े पहन लेते हैं। अपने चेहरे के ऊपर उसी तरह का जो है ना वो डिफरेंट वो कलर्स के साथ जो है ना वो उसको डार्कन कर लेते हैं, ताकि उनकी जो रिजेम्बलेंस है वो जंगल की, कोई जंगल की तरह हो जाए, वो प्रोमिनेंट ना लगे। ठीक है, वो कोई ऐसा उनको देखे, कोई जो दूर से देखे उनको पता ना चल जाए कि ये कोई शख्स है या आदमी है, उनको कोई जंगल की कोई चीज ही लगे, तो वो कैमोफ्लेज्ड होता है। सो अब टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या है जी, अ की वर्ड इज बैरिड इन द मिडल ऑफ द सराउंडिंग वर्ड्स, कि एक लफ्ज होता है जो इम्पोर्टेंट होता है, उसके आगे पीछे उसके अंदर हमने इतने अल्फाज लगाए होते हैं कि वो अंदर छुप जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेक एन अमेंडमेंट टू। अच्छा, ये पूरा ना चार पांच लफ्जों का जो है ना एक फ्रेज है। असल में जो कहना चाह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, ये अमेंड है बस। मेक एन अमेंडमेंट टू की जगह पे हम कर सकते हैं अमेंड दिस, दैट्स इट। अब देखिए, अमेंडमेंट जो है ना, अमेंड लफ्ज जो था, ये हमें लफ्ज रिक्वायर्ड था, ये बैरिड हो गया, ये कैमोफ्लेज्ड हो गया मेक एंड टू के अंदर, और अमेंडमेंट मेंट के अंदर ये छुपा हुआ है। ठीक है, तो बजाय कैमोफ्लेज्ड वर्ड्स इस्तेमाल करने के सिंपल कंसाइज वर्जन इस्तेमाल करें। अमेंड, मेक एन एडजस्टमेंट ऑफ, एडजस्ट, हैव अ मीटिंग, मीट, थैंकिंग यू इन एडवांस, थैंक यू, फॉर द purpose of discussing, discuss, arrive at an agreement, agree, at a later moment, later। अब देखें, जब आप कैमोफ्लेज लफ्ज को इस्तेमाल करेंगे, योर राइटिंग ऑटोमेटिकली बिकम फॉगी। ठीक है, और अगर आपने कंसाइज वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, तो आपकी जो राइटिंग है वो कंसाइज हो जाएगी। ठीक है जी, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह।